है अभी नहीं हुआ ओके Yes, ओके नहीं हुआ है। hello. Welcome to an exciting celebration, a movieversary, I would say, of कल हो ना हो 20 साल इस फिल्म को हुए हैं, जो मुझे भी नहीं पता, like quite surprising to like hear from सुहानी जब भी हम इस फिल्म के बारे में और शाहरुख के और भी थोड़े फिल्म्स के बारे में बात करते हैं, I think back in July August, इस साल आई थिंक बाजीगर को भी 30 साल हुए हैं, सो वी आल्सो टॉक्ड अबाउट दैट। उससे ही इस लाइक वीडियो की शुरुआत हुई थी, द इंसेप्शन ऑफ दैट वीडियो, दिस वीडियो, बिकॉज सुहानी ने बोला था कि अगर कल हो ना हो पे वीडियो कर रहा है तो जरूर मुझे बुलाना। सो लाइक आई वुड इंट्रोड्यूस सुहानी ने लिस्ट सुहानी फॉर बनाई दैट। थी, तब बोला था कि वी हैव टू डू डिस्कशन ऑन कल हो ना हो ध्रुव, एंड ही वाज बीइंग वेरी स्नॉब अबाउट इट, है ना, कि नहीं I know क्या, मुझे तो उतनी we अच्छी will नहीं लगी। we will आई डोंट नो, address this देन a week ago he's like कि क्या कर रही है तू 28 को, एंड आई वाज कि अभी तक कुछ ऐसा प्लान नहीं है। अरे एक फिल्म है उस पे करना है। बोली कौन सी फिल्म? तो ही सेड कल हो ना हो, एंड आई वाज लाइक व्हाट, ये क्या हुआ? ये कैसे ऊंट पहाड़ के नीचे आया? जी हाँ, इसलिए मैंने फाइनली फिल्म देखी और फिर जाके मैंने बोला कि करना है इस पे, इसलिए। और हु नन बेटर देन मिस्टर ध्रुव गोयल, जो मे, मेरा मेरा जो रेप्यूटेशन है या तो वो है कि सिर्फ इंटरनेशनल सिनेमा या डायरेक्टली करण जौहर, राइट? तो एकदम ऊपर से या नीचे हो गया इन टर्म्स ऑफ आई फिल्म एग्जैक्टली। टोल्ड हिम रेप्यूटेशन जो आई होता है। टोल्ड हिम ध्रुव इज अ धर्मा फैन, तो उसको बुला, Only no, ध्रुव को I will बुला। correct that. I'm only a Karan Johar directed by Karan Johar fan, not a whole Dharma fan, ओके, because there's lots of बट Dharma ये भी movies नोटेड that तो, don't have. लेकिन नोटेड। ये तो निखिल अडवाणी डायरेक्टेड फिल्म है, बाय द वे। We that is very arguable कि कितना उसमें निखिल अडवाणी का इनपुट है और उसमें कितना केजो का इनपुट है, बिकॉज ये केजो की ही फिल्म है। आई नो कि अभी आई वाज रीडिंग सम इंटरव्यूज की where Nikhil Advani was like everyone thought और everyone said कि करण जौहर की ही पिक्चर है essentially, He has बट ghost directed, है yeah. उसी की पिक्चर है, उसका स्टैम्प इतना ज्यादा, लाइक आई एम थिंकिंग Actually, उसका स्टैम्प इसमें एक्चुअली समथिंग लाइक माय नेम इज खान से ज्यादा इसमें है। लाइक यू कैन बहुत सी बहुत। एवरीथिंग वॉट एवर, एटलीस्ट जो मुझे अच्छा लगता है, आई नो आई एम द फैन हियर ऑफ हिज डायरेक्टोरियल एंड राइटरली वर्क। सो या ओके। अभी पहले आप बोलो, जिन जिन जो जो तारीफ कर रहे हैं पहले उनकी बोलो, ताकि मुझे अकेला ना लगे कि मैं अकेले ही तारीफ एब्सोल्युटली करने जा नॉट, रहा हूँ यहाँ पे पिक्चर की। सब सब एसआर के फैंस ही है। बिस्वा अमर्त्य का तो मुझे नहीं पता, लेकिन अमर्त्य रणधीर एसआर के तो फैन हैं, यस। अमर्त्य के जो फैन नहीं है बिल्कुल भी, वो मुझे पता है। ओके, सो एसआर के फैन Yeah, से यस यस ऐसे है। same, डॉक्टर same. रणधीर तो एसआर के हेटर, लेकिन जवान फैन, लेकिन ही इज काइंड ऑफ, मतलब वो लीग में आ रहा है वैसे। ओके yes, Kalhona is one movie that ticked all the boxes for me. A stellar cast, a leading man in his prime in a role tailor made for him, very terrific music and a heartwarming story. It had everything. या Let's इट हैज discuss this. एवरीथिंग। Absolutely, let's start discussing this like a heartwarming story. Um, so before that, Dhruv, please like start with this कि कभी ये फिल्म देखी थी? What was your earliest ओह memory of this दिस film? इज Uh, ओके, और क्या इंटरेस्टिंग था, यू जस्ट आस्किंग ब्रीफ में अगर हो दिस। सके ब्रीफ बोल दो कि क्या था, व्हाट वाज दैट, जस्ट गो डाउन द मेमोरी लेन एंड लाइक I mean, this is my honestly, this is my first memory of watching a movie in the cinema hall. Like, I'm sure मैंने पहले भी देखी थी 2003, so that's probably me 6, 7 years old, essentially watching this in the cinema hall. I must have gone Monday, Tuesday, like not a weekend. I remember I went with my grandmother, and मुझे याद honestly पिक्चर इसीलिए है क्योंकि मैं रोया पहली बार हूँ किसी चीज को देखते वक्त। सो वो मेमोरी तो बहुत स्पेशल होएगी, राइट? बिकॉज अगर आपको वो याद है कि आपने जो इसेंशियली, ये मेरे लिए पहली पिक्चर है जिसने मुझे दिखाया था कि पिक्चरें क्या होती हैं इसेंशियली, राइट? तो उसका मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंस है इन माय हेड। ऑफ कोर्स आई डोंट वांट टू, और मैं ऐसे पॉइंट पे आया नहीं हूँ अभी तक जहाँ पे मैंने इतना पढ़ लिया है पिक्चर है कि मैं ये सब को कभी भी इग्नोर कर सकता हूँ। मेरे लिए ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइक बेसिकली इस पिक्चर ने मुझे ये दिखाया था कि इमोशन इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स व्हेन यूर
But है ना emotion. The emotion is necessary, right? Amartya is, I know Amartya is making fun of you here, but हाँ, emotion is very important to me. I think in terms of films and filmmaking, and I thought इसमें इट्स नो डाउट कि वो चाहती है कि आपको, वो बहुत कोशिश करती है पिक्चर आपको रुलाने की, मैं ये इग्नोर नहीं करूंगा, और बहुत, एंड आई थिंक वो बहुत सक्सेसफुल है. मैं इस बार भी रोया हूँ, दो तीन तीन सीन, तीन चार सीन में रोया था. सो आई मीन आई एम Same. वेरी मच अफेक्टेड बाय इट स्टिल. एंड सो मैं ये कैवियट पुट कर रहा हूँ कि मैंने इतने सारे, मतलब मेरे लिए बहुत स्पेशल है, मेमोरी है, बट मैं अभी भी अगर मैं वो सब अगर हटा, मुश्किल है हटाना ऑफ कोर्स, बट अगर हटा दूं तो भी मुझे लगता है कि पिक्चर एक्चुअली बहुत अच्छी है इन अ लॉट ऑफ, इन टर्म्स ऑफ फिल्म मेकिंग टेक्निक, वट एवर यू, की स्क्रिप्ट लेवल पे, सेटअप पे ऑफ, जो आप साइड प्लॉट्स को आप मेन प्लॉट में इंटीग्रेट करते हो, वो सारी चीजें, कैमरा वर्क एटसेट्रा, जो जो भी सारी टेक्निकलिटीज है, वो सब भी आई थिंक अच्छी हैं. बहुत कुछ कुछ हैं प्रॉब्लम्स विच वी विल डिस्कस, एंड आई थिंक वो देखेंगे कि इतना 20 साल बाद कुछ चीजें एज नहीं हुई हैं, विच आई थिंक पीपल शुड acknowledge and address and talk about, I think also, right? So I think वो सब चीजें हैं, बट हाँ, बहुत स्पेशल फिल्म है मेरे लिए. मैंने पहले ही कहा था कि इसमें ऑब्जेक्टिविटी मेरे लिए बहुत मुश्किल है. मेरी, या लाइक आई वुड लाइक टू से कि मेरी तो वन ऑफ माय फेवरेट फिल्म्स इन जनरल, बट बिकॉज इट इज अ कॉर्नरस्टोन फॉर मी. नो, अगर अगर मैं ये करियर इन वॉट एवर फिल्म राइटिंग अबाउट फिल्म्स अगर परस्यू कर रहा हूँ, उसका पार्टली रीजन यही है, तो बड़े, तो आई मीन ऑफ कोर्स इट विल होल्ड अ स्पेशल प्लेस इन माय हार्ट. सो अच्छा, यस, सॉरी फॉर that- पहले ही इतनी सारी प्रेज करने के लिए, बट यस, यू it's okay, आस्क्ड, it's सो okay. मैंने मैंने Like, बोला ये सब. हाँ. बढ़िया, बहुत बढ़िया. एक्चुअली सुहानी, हम्म, आपसे आपको लाइक आपसे बात करने से पहले जस्ट देयर आर सो मेनी कमेंट्स यहाँ पे आए हैं. सो लाइक हम्म. डॉक्टर रणधीर ने यहाँ पे बोला है कि आई एडमायर हाउ कैरेक्टर्स इन कल हो ना हो ट्रैवल्ड फ्रॉम जैक्सन हाइट्स ऑल द वे टू ब्रुकलिन ब्रिज टू जस्ट टू पोस्ट जस्ट रन टुवर्ड्स ईच अदर. वैसे कितने सारे कमेंट्स आए हैं यहाँ पे. सो मतलब लाइक इवन डॉक्टर मेंशनिंग. ज्योग्राफिकली तो वो टोरंटो में भी प्लेस्ड है काफी फिल्म. न्यूयॉर्कर्स के सो लिए ये बहुत आम बात है. हाँ, न्यूयॉर्कर्स कैन डू दैट. इट्स नॉट अ बिग डील. या So for me, Saif acted best in Kal Ho Na Ho. हाँ, अरे okay. आई एग्री. I या also agree. So I had like Biswa का ये experience रहा है कि I had an entire row behind me filled with college girls, and by the end of the movie the theater was flooded with tears. इतने सारे emotions आ रहे हैं, इतने सारे like comments और thoughts आ रहे हैं about this film. It's kind of a landmark जैसा film आप लोग like बोल सकते हैं कि how बोलते ना एटलीस्ट किसके लिए नहीं तो ध्रुव के लिए तो यार ये मेरे लिए हो ही गया I was था. like landmark. I don't know if it's for like everyone. I would say other movies of Karan Johar are more landmark in terms of cinema, whatever thingy. So like kabhi, like this is before, just to mention last thing before Suhani goes, I think to me this is a bit like he's combining Dil Chahta Hai, because it's referenced in the film once. मैंने दिल चाहता है मैं उसका हेयर कट नहीं, something like that. With Frankie it's mentioned, but इट्स कंबाइनिंग वो थोड़ा लेड बैक और थोड़ा सा सिटकॉमी फील है मूवी में, थोड़े वेस्टर्न सिटकॉमी जो है, और विद उसका जो ट्रेडिशनल ब्रांड ऑफ मेलोड्रामा है, तो लाइक थोड़ा कभी खुशी कभी गम भी है, थोड़ा आई मीन लगान को भी एक रेफरेंस है गाने में ऑफ कोर्स, और थोड़ा वो ओल्ड स्कूल लाइक जो वो स्पेशलाइज करता है वो मिक्स कर रहा है. आई थिंक इट वर्क्स वेल, बट आई कैन सी कि आज अगर कोई देखेगा और जिसने पहले उसकी कोई पिक्चर नहीं देखी होंगी, उनके लिए ये अगर क्लैश जो है दो दो स्टाइल्स का अगर वर्क नहीं करेगा, आई कैन टोटली अंडरस्टैंड दैट. सो यस, आई So जस्ट over टू, to सुहानी जी, जिनके थ्रू ये वीडियो पॉसिबल हो सका. सुहानी जी, what was your earliest memory watching this film, और क्या था, and what was your reaction तब की और अब की भी as compared to now, मतलब क्या था? So 20 years ago, I think I was in class 11th or 12th, and we went to watch this film from our hostel, and we went in a group. And of course, the scene was similar. Everyone ended up crying buckets of, tears at the end of the movie. And the soundtrack was very popular amongst all of us in the, in our hostel rooms.
एंड ये बिस्वदीप अपना किस्सा शेयर कर रहे थे, तो मुझे याद आया कि लड़के भी गए थे, बॉयज हॉस्टल से बॉयज भी गए थे देखने, एंड हाउ कैन दे, यू नो, young boys, they can't accept that they are crying over a fictional character dying in a movie. Mm-hmm. So बाद में हमें पता चला, हमारे दोस्त ने किस्सा बताया कि ये तो पिक्चर देख के रो रहा था, लेकिन कहता है भाई बहुत गर्मी है, पसीना बहुत आ so this is one memory which is associated with Kal Ho Na Ho. And बहुत सालों तक, जब तक मैंने वर्ल्ड सिनेमा, इंटरनेशनल सिनेमा की बहुत ही क्लासिक या आइकॉनिक मूवीज नहीं देखी थी, तब तक आनंद, ऋषिकेश मुखर्जी की Mm-hmm. आनंद मेरी फेवरेट फिल्म थी. और अभी भी if someone asks that name one film which is your favorite film, I think the first film which will come in my, जहन, मेरे जो जहन में पहली फिल्म आएगी वो होगी आनंद. And when I saw the movie, I could, draw a lot of parallels of Mm-hmm. Anand from Anand in Kal Ho Na Ho. Mm-hmm. A very happy-go-lucky chap who believes in living in the moment because he doesn't have more moments in his life, Mm-hmm. much moments in his life. Anyhow, his death teaches everyone around him how to live. Mm-hmm. जिंदगी बड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं. द सेम Mm-hmm. कॉन्सेप्ट Mm-hmm. कल हो ना हो में भी है. तो इनफैक्ट आई से कि जो बाबू मोशाय का कैरेक्टर था अमिताभ बच्चन का, सर हु इज वेरी अपटाइट एंड वेरी सिनिकल अबाउट लाइफ, एंड Mm-hmm. जिंदगी से रूठे हुए हैं, दुनिया भर का बोझ अपने कंधे में है, बिल्कुल वही कैरेक्टर नैना कैथरीन कपूर का है इन अ वे. Mm-hmm. एंड शाहरुख खान के अमन का कैरेक्टर बहुत कुछ आनंद से इंस्पायर्ड है. तो मैंने, और मुझे याद है कि उस समय की मैगजीन्स वगैरह में भी ये बात आई थी कि ये हमारे समय की आनंद है कल होना. Mm-hmm. एंड देन आज जब मैं देखती हूँ तो आई कैन ड्रॉ सो मेनी पैरेलल्स फ्रॉम सफर. एंड सफर एक फिल्म थी, राजेश खन्ना अगेन, उसमें भी वो Mm-hmm. एंड में ही सफरिंग फ्रॉम सम टर्मिनल डिजीज और उनकी Mm-hmm. डेथ हो जाती है. देन देर इज अ हैवी इन्फ्लुएंस ऑफ मासूम, where a married lady accepts the illicit child of Mm-hmm. what should I say, love child of Love an child. Mm-hmm. illicit affair of Mm-hmm. her husband with another woman. Mm-hmm. Then तो मुझे लगता है कि ये बिल्कुल करण जौहर का ट्रेट है कि वॉट एवर मूवीज ही लव्स, he makes an amalgamation of all that, और उसमें वो अपना थोड़ा मेलोड्रामा और अपना स्टैम्प, अपना स्टाइल डालना, जो ध्रुव कह रहे थे कि इट इज, and it is written and written by and written and conceptualized by Karan Johar. The Yeah, yeah, yeah. direction is by Nikhil Advani. लेकिन बहुत समय तक, हमारे समय से बात चल रही है कि Karan Johar has ghost directed the movie because Yeah. actually इतना strong stamp है Karan Johar का. And Dhruv, what I could notice, Mm-hmm. not only direction, even the way Shah Rukh Khan is talking in some Yeah. of the conversation, there's so much, gestures of Karan Johar as if Karan Johar has told him or has Yep. acted the scene for him. And he's trying to recreate, those Yeah. gestures. क्योंकि अब हम करण जौहर हर हर जगह देखते हैं हम करण जौहर Exactly. को, तो Uh-huh. हमें पता है वो कैसे बात करता है. In some of the scenes, the way he is, Yeah. cooking dal makhni with the ladies, and the way he's annoying Nana, there's lot of Yes. Karan Mm-hmm. Johar's behavior in that. तो Mm-hmm. या कल हो ना हो, मैंने उसके बाद बहुत रिविजिट की, और आई थिंक ध्रुव एंड आई आर आल्सो द I don't want to sound boastful, लेकिन we are also the perfect candidates because we have lived as New Yorkers for brief Oh, amount yeah, of that's time. true. Yes. Yes. एग्जैक्टली. Yeah. सो ये चीज मैं So बाद में थोड़ा मेंशन करने वाला था और Mm-hmm. पूछने भी वाला था कि वाज दैट, बट आपने पहले से ही यहाँ पे उस चीज का yeah, मेंशन कर yeah. दिया. बट यस, गो अहेड विद दैट. And when I revisited the film, I could, pinpoint कि मैंने इतनी सारे locations कल हो ना हो के cover कर लिए हैं that I could, very well start a New York tour of कल हो ना हो locations. And होएगा पक्का. so when I'm I, sure someone has done this. Like this is like a desi yeah, tourism का thing. this is a very 100%. good business opportunity. Yeah, we should suggest our friends over there. Yes. But तब भी ध्रुव एंड संकेत, मुझे कल हो ना हो मेलोड्रामा से ज्यादा उसकी ह्यूमर के लिए पसंद है. Mm-hmm. I love its humor.
I love its dialogue and the all the actually Saif Ali Khan is my favorite from the film. He's the show Mhm, stealer and he's amazing, phenomenal as Rohit and the mhm, character of Rohit is beautiful. But mhm, ये जो पूरा उनकी chemistry है, camaraderie है और जो first half का humor है till it leads to big reveal is my mhm, favorite portion of the film. mhm, And it was very new for us as mainstream audience of Shah Rukh Khan, films. वो थोड़ा Americanized humor और treatment of the film. There are so many moments intercuts where they are breaking the fourth wall and they are directly yeah, addressing the audience about कि प्यार mhm, क्या है एंड मेरा mhm, पहला प्यार क्या था और नैना yes. मुस्कुराती है ये जो सारे मोमेंट्स है आई डोंट थिंक हमने मेन स्ट्रीम सिनेमा में देखे थे उस वक्त सो इट वाज हिंदी में वेरी तो न्यू नहीं, आई फॉर अस डोंट थिंक बॉलीवुड में तो, यस यस, या फ्रॉम बॉलीवुड में व्हाटएवर नहीं आई नो। देखे थे हाँ। so although Shah Rukh Khan is known as being the most what should I say the most influential overseas star Yeah. but here Karan Johar just carried all of them and set their life in New York and kind Mhm, of again influenced from DDLJ and mhm, immigrant lives. He portrayed the immigrant life. yeah. So I think it gave a more strength to the image of Shah Rukh Khan as the overseas star. And once Mhm, again, I'll end with this that ये जो अभी जो शाहरुख खान की personality है ना, he is now the larger, he is now like above anything. He's the mhm, miracle, he's the messiah. He's not only saved Bollywood, he gives hope to so many of his fans and followers and lovers every day. तो अमन का कैरेक्टर अब मुझे लगता है कि वो जो it was kind of a teaser of what Shah Rukh Khan is going to be in coming yeah, years. The way he enters the scene, he yeah. is the savior, he's the Oh yeah. messiah, he's I the mean, angel, he's and Jesus. now he has taken, yeah, Yeah. now he has literally taken the role of Aman. He has Now. taught people to love and live in the moment, and he has taken the what should I say the role of an angel in a lot Mm, of many people's lives. mhm, So this is my initial thoughts on these are yeah. my initial thoughts on Kal और Ho Na आपके लिए एक Yeah. कमेंट है सुहानी जी, ये देखिए, इट्स टाइम टू कम बैक टू न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क Ho. मैसेज Oh, किया। she's my friend. Uh, इसलिए यस एंड I wish. डॉक्टर एज वेल, हर सर की। यस बट so coming to me, Yes, sir. आप actually बोलो objectively. अरे बाप रे। सो एक्चुअली क्या हुआ था, थोड़े सालों पहले न्यू ईयर, हाँ न्यू ईयर हुआ और मैं कुछ लाइक मेरा प्लान्स था नहीं, और फिर आई वाज लाइक कि कुछ तो फिल्म देखते हैं, कोई भी कुछ नहीं, ब्रेनलेस ऐसी ही कोई ओल्ड मतलब 2000s वाली बॉलीवुड फिल्म देखते हैं। Mhm, सो आई पिक दिस फिल्म वैसे, और मैंने मतलब कुछ भी हो रहा है, मुझे कुछ पता नहीं, जो भी ऐसे देखना है, कोई सीरियस या कोई भी वर्ल्ड सिनेमा वाली ऐसे कुछ नहीं देखनी थी, तभी कोई मूड नहीं mhm, था। सो mhm, दैट्स द रीजन आई वॉच दिस फिल्म ऑन न्यू ईयर्स डे। और जब देखी, फर्स्ट हाफ तक ही देखी, पहले तो ऐसा था कि मैंने सिर्फ वो प्रीटी वुमन वाला गाना तक देखा, और मैं बोला यार ये ऐसा कैसे हो सकता है, लोग ऐसे गाना ऐसे आ जाते सर हैं। और पिक्चर है वो ऑब्वियसली सब। लाइक मेरा वो नहीं था कि कैसे लाइक हाउ इंडियन म्यूजिकल्स वर्क, Yes, फिर yes. तभी मेरा इतना लाइक इतना नॉलेज नहीं था। Mhm, सो तभी मैंने इग्नोर कर दिया था, और फिर जाके जब इस फिल्म को न्यू ईयर्स वाला जो दिन था, तभी मैंने mhm, रीवॉच किया मैंने, आई वुड mhm, से। तो तब मैंने सिर्फ ओके बोला, चलो एक थोड़ा ओपन माइंड रख के वो फिल्म देखूं, और जस्ट ऐसा देखूं कि इट्स ओके टू हैव अ सॉन्ग, एंड इट्स ओके कि ऐसे रैंडम लोग यहाँ पे आते हैं और उस टाइम mhm, मतलब ऐसे नाचते हैं और फिर चले भी जाते हैं। सो चलो आगे देखता हूँ, और मैंने देखा और मैं एंगेज्ड रहा था जस्ट फर्स्ट हाफ तक, लाइक इंटरवल तक। mhm, देन पता नहीं फॉर सम रीजंस मैंने आगे कंटिन्यू नहीं किया था, आई डोंट नो। mhm, और फिर जाके उसके बाद मैंने लाइक अभी हाल ही में रिसेंटली ये फिल्म mhm, मैंने पूरी देखी और कंप्लीट की। mhm, और एट बैक देन जब ये मुझे ये इसका नॉलेज नहीं था कि हाउ इंडियन म्यूजिकल्स वर्क,
तभी नहीं था, लेकिन अभी मैं देखता हूँ, सो हम्म, इट्स जस्ट जब जब फर्स्ट सॉन्ग आता है लाइक प्रिटी वुमन, ही हम्म, इज जस्ट सेइंग हिज हार्ट आउट कि मैंने किसको देखा है, कौन है वो इंसानी, लाइक आई जस्ट लाइक वो उसके दिल की बात बताता है और ये सब इट काइंड ऑफ लाइक वर्क्स फॉर मी वैसे। मतलब I just to like I'm not interjecting but वो थोड़ा बस adding to that like Pretty Woman, एब्सोल्युटली। so what you're saying कि Pretty Woman start जब करता है उसके पहले एक्चुअली वो एक्सप्रेस थोड़ा कर चुका है अपने लुक से, और जब वो प्रीति जिंटा को देखता है, सो प्रीटी वुमन इट्स एसेंशियली अंडरलाइन है, वो अब 5 मिनट का अंडरलाइन है, आपको अच्छा लगता है या नहीं लगता वो आप पे डिपेंड करता है, बट वो बॉलीवुड में आई थिंक यूजुअल है, द अंडरलाइनिंग You know, पार्ट और हाईलाइटिंग कलरिंग पार्ट जो भी बोलते हैं टेक्स्ट का, वो आई you थिंक know, I would डिपेंड्स just ऑन। like to add one thing that I'm with Sanket हम्म, in this point, because even when I was a dreamy teenager 20 years हम्म, ago, it was a bit too much for me कि यार अभी हम्म, देखा इतना कितना प्यार हो गया, you know, कि that he's एग्जैक्टली, arranging a love after his life for her, कि मतलब they have met so recently, इतना हम्म, कितना प्यार हो गया कि वो कह रहा है कि मैं जिंदगी के बाद भी तुमको प्यार करूंगा, और अगर मैं मर भी गया तो कोई ना एक बहुत अच्छा प्यार तुम्हारे लिए अरेंज करके जाऊंगा। तो हम्म, even as a dreamy teenager it was little too much for me, but that's the, you know, beauty of conviction of Hindi cinema. एब्सोल्युटली नहीं, आई मीन इवन आई कैन टोटली अंडरस्टैंड कि क्यों लोग वो लीप नहीं लेंगे। मेरे लिए तो मैंने जब देखा तो मैं तो शाहरुख खान का फैन तभी बन गया था, तो मैंने तो लीप आई थिंक पहले सेकंड से ले लिया होगा। तो आई एम जस्ट सेइंग कि अभी जो जब मैं रीवॉच कर रहा था आई एम लाइक हाँ ये तो नेचुरल है, सबको होता है, लाइक इन माय हेड ये सब कि 1 सेकंड में देखा और प्यार हो गया और सब कुछ, मतलब यू नो आई एम लाइक ये सब तो होता ही रहता है, क्यों क्यों कोई इसको क्यों नहीं बाय करूं मैं इस वर्ल्ड में होता रहता है, मतलब ये एनीवेज। कभी ये फिल्म को देखते वक्त मुझे सिमिलर फीलिंग्स आए थे जब जैसे सुहानी को आए थे, जब भी वो उनको जब भी ऐसे याद आया था कि लाइक जब भी उन्होंने आनंद देखा था, आनंद मीट्स मासूम एट वन पॉइंट, तो कैसा हो सकता था ये है। बट मेरे लिए और एक फिल्म ऐड होती है जो हार्डली किसी ने सोचा होगा और हार्डली कोई ये फिल्म को लाइक सोच पाएगा लाइक इस कॉन्टेक्स्ट में। आई फील ये फिल्म आनंद मीट्स मासूम मीट्स हिच, विल स्मिथ वाली हिच। सो यस, Oh, यस, पहले आई थी इसके बाद है में आई दिन थी। लड़के इन। यस। आई That is थिंक the मैं one problematic aspect of the film, but yes, okay. एक्चुअली Yeah. But anyways, Hitch, I think हिच बाद में आई हिच थी, आई from what I know. थिंक 2005, यस, Yes. मेरे 2005 2 partner साल ने बाद आई कॉपी थी, की बट थी स्टिल फिर भी unofficially. लाइक आई कैन मेक अ पैरेलल कि कैसे Of course. वो बंदा है उसमें, हाँ. वहां पे दूसरे लोग की आई वुड से सेटिंग लगा रहा है, और कैसे दोनों को ऐसे मिला रहा है, एंड हिज लव लाइफ भी इतनी अच्छी। वो खैर उस फिल्म में तो उसकी उसकी खुद की पर्सनल लव लाइफ होती है, वैसे इसमें उसकी पर्सनल लव लाइफ जैसे नहीं ही होती, ना के बराबर जैसे, मतलब बट है ना, बट अब वो सैक्रिफाइस कर रहा है ना। सैक्रिफाइसिंग, करेक्ट, वो सब वो सब, बट ट्रुथ बी टोल्ड ये सब चीजें जो मैं बोल रहा था, और ध्रुव आई थिंक मेरे से एक्सपेक्ट करेगा, सुहानी भी वन नहीं पॉइंट ठीक है, एक्सपेक्ट मैं करेगी मैं कि हैप्पीली सुनने के लिए तैयार हूँ सब कुछ मुझे कोई ऐसे वो नहीं है। एग्जैक्टली, तो 6 दिन लड़की इन SR के डेडेड, यस, ये सब चीजें, सो ये सारी चीजें आई थिंक ध्रुव को अच्छी नहीं लगी, बट स्टिल ये सब ह्यूमर जैसे सुहानी ने मेंशन किया था पहले, वो सब मुझे काफी वर्कआउट हुआ था एज कम्पेयर टू नहीं द इमोशंस। नहीं, जस्ट टू करेक्ट, वो टर्म जो और वो जो सीक्वेंस है पूरा उसका ओवरआर्चिंग जो भी आइडिया है वो प्रॉब्लमेटिक है। पिच उसी मोमेंट के अंदर जो हो रहा है वो कॉमेडिक अच्छा है, लाइक वो मुझे अच्छा लगता है, लाइक इन द सेंस दैट there's so many great dialogues between Saif Ali Khan and Shah Rukh Khan in that ओ whole अमेजिंग। sequence. I'm like ये सब कौन लिखता है, और ऊपर से I think that was one of the few films in which the homoerotic touches, I think this is the first time उसने डाले थे, and या वो या he's not subtle at all. Karan Johar, so he is going which full was on with again politically very incorrect, but those were the times, you know. yes, yeah, अच्छा, सो uh, एक्चुअली yeah. कमिंग टू दिस फिल्म, जब मैंने अभी अभी देखा वैसे यही फीलिंग आई थी, आनंद मीट्स मासूम मीट्स Mhm, हिच, बट स्टिल जब भी ओवरऑल जब देखा मैंने, आई आई क्वाइट एंजॉयड इट, ऐसा नहीं कि मुझे mhm, एंजॉयमेंट नहीं, एंगेजिंग था, एंजॉयमेंट था। mhm,
थोड़े सीन्स में मुझे हंसी आ रही थी, जहाँ पे हम्म, लोगों को, जैसे ध्रुव बोल रहा था, मैं कोई सीन्स में अभी भी रोया हूँ। आई एम हाँ, श्योर कि वो सारी सीन्स में मुझे हंसी आई थी, जो कौन लास्ट सा था फाइनल ये सीन, मुझे सीन्स जानना है। नहीं, फाइनल सीन्स थे जहाँ पे शाहरुख को लोग मिलने आते हैं, और उसमें हंसी आई आई वुड थी? से सर आपका एग्जैक्टली। अलग ही सिस्टम है फिर तो, मेरा नहीं, तो दिल टूटा हुआ You था। have बट heart of एक्चुअली a stone. You have heart of stone, Sanket. बट एक्चुअली मैं सच बोल रहा हूँ कि लाइक मुझे वो सब सीन्स इतने लाइक इमोशनली वर्कआउट ज्यादा नहीं हो पाए फेयर थे, इनफ। क्योंकि लाइक एट दैट टाइम उन लोग जो मेलोड्रामा करते थे, और इट्स अभी के अगर जमाने से देखे और अभी के लेंस या अभी के थॉट प्रोसेस से देखे, एंड ऑब्वियसली वी आर एक्सपोज टू सो मेनी अदर ग्रेट फिल्म्स, तो उस टाइम से मतलब ऐसे देखे तो ओके, दैट द मेलोड्रामा डिडंट क्वाइट वर्क फॉर मी, वैसे था। एंड आई वुड से कि अगर, हाँ, मैं समझ सकता हूँ वो लाइक सुहानी का भी पॉइंट ऑफ व्यू समझ सकता हूँ कि द गर्ल इन अ टीनेजर्स लाइक watching a शाहरुख खान मूवी कि कैसे हो सकता है, और तभी वी weren't exposed to these kind of world cinemas, तो कैसे। I cried last night bitterly at the end. Although मुझे लगा ना, I have 20 years later, I have seen so many ups and downs in my life. I have seen real grief, real losses, but still, few of the moments broke me. I think, The and score again, is it's very, very over the top, but Mhm. the way our Hindi film does it, really kudos to their conviction. Hmm. It's I not I a think I एक्चुअली honestly think वो हाँ हाँ स्कोर इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है मेरे लिए, लाइक जो बैकग्राउंड स्कोर है इन दो हाँ सीन्स, हाँ लाइक हाँ लास्ट सीन में, अगर आई डोंट केयर कि उसमें क्या वो लाइक हो क्या रहा है एसेंशियली, क्योंकि वो बैकग्राउंड स्कोर ही ऑटोमेटिकली आई गेट्स मी क्राइंग, क्योंकि उसका फॉर मी उसका स्ट्रेंथ वैसा है। और आई वुड हम्म ऑल्सो आर्ग्यू कि उसमें कुछ कुछ मोमेंट्स ऐसे हैं जो एक्चुअली काफी ज्यादा इमोशनली टचिंग है, स्पेशली बिटवीन Saif Ali Khan and Shah Rukh Khan again. The scene when they are talking about Naina and how he uses this as a way of talking, like those moments, I think are the things which are very special still about the film. Like बट वो हाँ हाँ, smaller whatever the moments are. मैं एक Hmm. चीज बोलना चाहता था कि there's one more person जो मेरे से काइंड ऑफ थोड़ा एग्री एज इन उसके ही थॉट्स उसके मेरे जैसे है, Hmm. Hmm. हु इज डॉक्टर, जो एस आर के का हम्मी Hmm. शादी में रोने वाला फेस देख देख के मैं भी हंसा था। हो सकता है, बट उसमें भी साउंड ट्रैक इज टू स्ट्रॉन्ग आई फील फॉर मी, एंड अगेन इमोशंस बिटवीन द कैरेक्टर्स आर टू स्ट्रॉन्ग फॉर मी टू लाइक लाफ, लाइक आई तो क्राई व्हेन शी इज वो जब लाइट डिम होती है और दोनों एक दूसरे को मिलते हैं, वो मेहंदी लगा रही है उसके उस पे, और वो उसके yes पास yes जाता है, those आई एम those लाइक scenes are मैं good. क्यों ना रोऊं उस पे, लाइक ये तो मेरा, ये तो लाइक इट्स जस्ट आई डोंट नो, आई जस्ट थिंक इट्स filmmaking also actually done actually really well. बट Credit to whoever was there, Nikhil Advani और एक्चुअली Karan Johar. एक्चुअली मैं एक चीज और एक्सपेक्ट कर रहा Hmm. था। ओके, मैं ऑन वीडियो मैं बोल सकता हूँ, मुझे Mm-hmm. इतना शर्म नहीं आएगा क्योंकि मेरी बॉलीवुड की नॉलेज थोड़ी सी मतलब इतनी अच्छी नहीं है, बट आई वाज Uh-huh. एक्सपेक्टिंग मितवा गाना, जो Oh, इस sir. फिल्म में है भी नहीं, बट इट वाज क्वाइट लाइक बोलते ना कि ऐसा वो फील आ रहा था, शाहरुख खान जस्ट लोनली, और मितवा का मैंने साउंड लाइक मैंने म्यूजिक वीडियो देखा है, बहुत सारी सीन वो खुद अकेले है यहाँ पे गाते हैं मितवा और वो सब है, सो वो फील जैसा आ रहा था यहाँ पे, फिर ऑब्वियसली फिर पता चला कि नहीं वो दूसरे तो फिल्म में है। कभी अलविदा ना कहना का है सर। एग्जैक्टली और उसमें फिर जाके पता चलता है कि रानी मुखर्जी वो फिल्म में है, सो मैं बोला यार Yes. रानी मुखर्जी तो ये फिल्म में नहीं है, सो उसमें आज प्रीति भी है, हाँ, प्रीति हाँ, भी उसमें है। प्रीति जिंटा भी है, अभी अलविदा ना कहना हम्म में। वो मत देखना, आपको बिल्कुल नहीं अच्छी लगेगी। बट वो तो किसी को, बहुत कम लोगों को अच्छी लगती है आई थिंक। एनीवेज वी विल नॉट टॉक अबाउट बट दैट। बॉमिक करके एक हम लोग का म्यूचुअल फ्रेंड है, ध्रुव, सो ही राइट्स द होल सेटअप फॉर अ डेट बिफोर द टाइटल सॉन्ग किक्स इन, सो ग्रैंड एंड ऑलमोस्ट अ ड्रीम फॉर मेनी ऑफ देम। हाँ, या एब्सोल्युटली, और एब्सोल्युटली। इवन इवन लेकिन एक चीज तो थोड़ा उसमें भी हंसी आया था करो कि करो, अच्छी बात है, वो जो क्वाम्स निकालने चाहिए, हम लोग पुश बैक करेंगे।
लाइक एग्जैक्टली वही था कि वो जो GUJJU वाला Oh, see, व्हाट now I will वो see वो I आई think वो heightened level पे आपको accept करना पड़ेगा कि वो stereotyping चल रही है सबकी, कब but I से don't think चल सिर्फ रही है, गुजरातों की कब है. से चल रही है वो तो, I think गोवंस की, GUJJU is for एंग्लो me इंडियंस की, hilarious. Sorry. Same पंजाबीज, as या GCGC is also amazingly funny. Good catch of Gujju community. कौन लिखता है ये सब? Like I'm like, uh, that like I think so we yeah. guys, we need to mention Niranjan Mhm. Iyengar. Yes. Amazingly funny dialogues. When I Yeah. read his name, because he has worked with Kejo in My Name is Khan too, Hmm. and in I fact, think most of his other movies also, if I'm not he wrong. has written the lyrics of Tere Naina. And Wow. I was like, my jaw dropped when I realized that he has written lyrics of Mm. Tere Naina from My My name is Name is Khan. Khan. So, a very talented man. And Mhm. मुझे कल होना हो के डायलॉग्स इतने ज्यादा पसंद है, मतलब उसके जितने भी फनी, मेरे पास दो कुत्ते हैं, एक्चुअली मेरे घर में बहुत कुत्ते हैं, कभी कभी मैं खुद कुत्ते की खुद ही तरह फील कुत्ते की करता तरह हूँ. फील करता हूँ. There are so many amazing dialogues, Yeah. and that just keeps your interest very intact in the movie. And or I Yeah. think not only dialogues, but the way dialogues are weaved and the Yeah. direction has involved those dialogues in the Yeah. scenes is Sanket, amazing. tell The me first, this. Yeah, no, sorry, very sorry. I want to ask Sanket about one very specific scene in which I genuinely laugh like anything, and then of course this scene shifts into serious territory. But I'll ask him about if he finds that funny or not. Maybe it's hmm, just my Satish Shah bias because I think the man is hilarious. But there's the scene where they go to the house, Naina's house, hmm, and he asks for coke in a way which is yes. not meant as that. Do you find that funny, or am I the one who's just finding that funny नहीं and एक्चुअली what he says काफी सारे next? ऐसी नहीं ऐसी नहीं काफी सारे ऐसे सीन्स हुए थे विद सतीश शाह के वो Yeah, एक्चुअली फनी थे कि कोक और yeah. होल और सब Right. Yes. और वो होता है लोग मैं गुजरात जाता हूँ वहाँ पे लोग ऐसे बोलते हैं कोक Yeah, का तो नहीं पता लेकिन वहाँ पे होल तो डेफिनेटली लाइक और ये कॉमन चीज है कि हाँ हॉल को होल बोलना वो yeah, ओके ये काफी कॉमन चीज है और वही सेम चीज इसमें अप्लाई की है काफी हद yeah. तक Hmm. बट हाँ लाइक वो चीज थोड़ी ओके लेकिन एक भौमिक who is also Gujarati, a lot of who just still use the GUJJU in their Sangeet function. Okay, भौमिक मैंने तो कभी सुना But नहीं है लेकिन ठीक है. but I have seen such people in New York. I have seen people from certain community behaving in a similar way. बट So हाँ ये एक्चुअली सुहानी आई एम सो सॉरी लेकिन आपने ये बात बहुत अच्छी छेड़ी कि यू गाइज हैव स्टेड इन न्यूयॉर्क फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ Hmm. टाइम क्या था लाइक व्हाट वाज द रिएक्शन एंड व्हाट्स द फंडा ओवर देयर एंड लाइक हाउ आर द reaction as in एनआरआईज I was in India when it released, but नहीं now when I watched जब the movie, हम्म, I think even I could figure out that some scenes are strictly shot in the set. The set has been established for Hmm. certain scenes, but the production design is amazing, and even cinematography of the film, the way Anil it has Mehta, I think. Yeah. somehow captured all the iconic landmarks of New York. And I was very stunned, to see that the film begins with कि about New York. ये Yeah. न्यू Hmm. यॉर्क शहर है, यहाँ सब जल्दी में है, हर चौथा आदमी इंडियन है, और इस शहर ने मुझे सब कुछ सिखाया, बस प्यार करना नहीं Hmm. सिखा सका, है ना. Saka. Hmm. So I was like, what's the relation? Why it is starting with, New York, and then it is going to her love Hmm. life. But जैसे film progress करती, you understand that New York also is, in a way, our filmmakers are not as masterful as Woody Allen or other, Hmm. you know, eminent filmmakers of the world. लेकिन कहीं पे उन्होंने न्यूयॉर्क को establish किया है as a Huh. character. And तो उसी से आते हैं वो पंजाबी community, and then गुज्जू community, and
what should I say, a rishta between them. Mm-hmm. So yeah, it is a very Yeah. much a part of New York culture, a Desi immigrant New York culture. So I'm sure I can, I can assume that it must have increased the popularity of all these Yeah. actors, especially Shah Rukh Khan and the Dharma team, Karan Yeah. Johar and others, to a Yeah. great height. And Yashraj Yeah. as well. यशराज कहाँ है इसमें? क्या? यश राज नहीं है इसमें. यशराज था, I don't. राइट? आई थिंक मैं किधर तो सुना तो था, ऑब्वियसly it was Yeah, I यशराज don't as think well. they were involved in this. If I'm not wrong. Oh, Anyways, And no, what? in fact, Sorry. and Dhruv, if you can see, if you can remember, even that that whole setup of it, they are Indianizing their restaurant so that it runs Yes, I was successfully. about to mention that only. It's very close to reality. Yeah. You'll see Yeah. many little restaurants which which strictly very closely to their Indian identity to Yes. in order for their business to flourish. Yeah. Yeah. एक्चुअली Absolutely. Hmm. एक चीज में था, आई एम सो सॉरी, Yes. Yes. यशराज नहीं, यश जौहर वाज द प्रोड्यूसर. Yes, He's Johar, the. yeah, मैं That was थोड़ा the whole कंफ्यूज हो article. रहा Well, I wasn't reading. I read the headline. Ki yeah, his death coincided with whatever Aman's yeah, yeah. death in the film, sort of. So it very much seems था. like Hmm. the Hmm. passing of the real life into the But your film. thoughts, like, कि कैसा था, how was New York shown, or how was So like the this is the community? first time I've seen it after I've been to New York. Huh? My God, this is my reputation. अरे सर आप देखो गुरु सिमरन, मैं वहाँ पे और हिंदी पिक्चरें देखूंगा तो होएगा ना ये. मैं कल हो ना हो अवॉइड करता हूँ, टू बी वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि मैं इतना इमोशनल हो जाता हूँ देखने के बाद. दिस इज द फर्स्ट टाइम आई हैव सीन इट आफ्टर बीइंग टू न्यूयॉर्क. तो मेरे लिए आई वाज लाइक, so I'll be very honest, I think with Karan Johar I don't expect him to be a filmmaker about location or real life. Essentially, मेरे लिए he operates in his bubble world, whatever you want to call it. न्यूयॉर्क है इसमें, but I also think इसका ऐसा न्यूयॉर्क है जिसमें हर मोड़ पे आपको अपना जो पर्सन होता है वो मिल जाता है. देयर आर सो मेनी इंस्टेंसेस इन दिस मूवी कि दो लोग बात कर रहे हैं, कैमरा राइट टर्न करता है तो कोई पीछे खड़ा है, या Yes, कैमरा लेफ्ट yes. टर्न करता है तो कोई पीछे खड़ा है, जिनको वो जानते हैं, सब सुन रहे हैं एक दूसरे की बातें. लाइक इनका वर्ल्ड वो ही है जो करण जौहर बनाता है फॉर मी. ऑफ कोर्स उसमें व्हाट सुहानी सेड इज टोटली राइट दो, कि वो मेल्टिंग पॉट कल्चर ऑफ न्यूयॉर्क जो है वो थोड़ा आ जाता है कलोना हो में, स्पेशली जब उनकी कम्युनिटी यू सी which actually is a very utopia है almost. उनका जो street है, which is black people, white people, everyone sort of, Yeah. there's the moment Asians, with yeah. there's the moment with this handicapped person, Shiv, Yeah, who's Shiv, yeah. who's participating in the basketball thing when he's stood up there and people are helping him out. एक चीज Very पूछनी थी, ये क्या yeah. वो डू द राइट थिंग वाला स्ट्रीट है बाय एनी चांस? मैं नहीं obviously मैं न्यूयॉर्क sir. You are going too highbrow for Karan Johar. Do the right thing is but do the right thing is, it's not the same street, but it's do the right thing तो is about the internal problems within that street, right? अच्छा, नहीं वो मैं पूछ रहा था कि डू द राइट थिंग वाला आई थिंक वो ब्रुकलिन में होता है, राइट? सो ये भी उधर ही है कि किधर? और तो वो वाला They set it, I think उनका सेट जहां बनाया था और थोड़ा सा जहां शूट किया है वो ब्रुकलिन है. But see, my thing is, in a Karan Johar movie, Brooklyn will look a little bit like a glossy Brooklyn. Like, I think usme, like, I don't expect realism only, to be very honest, with a Karan Johar film. Emotional realism, I expect. Locational realism, I'm like, chalo, theek hai, I'll buy. What I think one of the comments said कि वो यहाँ से वहाँ पहुँच गए न्यूयॉर्क की ज्योग्राफी में. I'm like, ये इन्हीं की दुनिया है. Like, ये कहीं पे भी पहुँच सकते हैं. Like, ऐसे यशराज की पिक्चरों में भी होता है ऐसा कि आप वो बोलते, आई रिमेम्बर, ये स्टिल दिल तो पागल है में वो बोलता है कि मैं घूम कर आ रहा हूँ बाहर कहीं एक दिन में, और वो कहाँ जर्मनी में चले जाता है एक शॉट के बाद. I'm like, ये क्या, like, I'm like, ये सब लॉजिक का stuff doesn't like To to me begin matter. with, Yeah. even to begin with, जो सारे लैंडमार्क्स प्रीति जिंटा नैना कवर करती है अपने मॉर्निंग जॉग में, Yes. it is impossible.
Yes. If it's not Karan Johar's movie, it's impossible. ये Yeah. वो ट्रैक ही पूरा न्यूयॉर्क में कोई कैसे जॉगिंग करेगा? It has Yes. Central Park, it has it has Times Square, it Bridge has है ना काफी Empire Street, Fulton Park, Fulton Ferry Park, and then it has Charging Bull. तो Mhm. मतलब ये तो उम्मीद ही नहीं करना है कि हाँ, I थोड़ा think भी realism रियलिस्टिक का डिपिक्शन. expectation थोड़ा, I mean हाँ. मेरे लिए at least I'm like melodrama है, melodrama की तरह treat करो, and I don't think हम्म. picture has any, which is why my actually biggest हम्म. problem with a Karan Johar film is My Name is Khan, because I think My Name is Khan में वो लोग कोशिश करते हैं real world को introduce करने की, and I think वो weakness है picture की. I don't think he's a real world filmmaker. He is a heightened emotion, heightened whatever lives. आप सोहो बिल्डिंग्स में सेट करो, हाई राइज अपार्टमेंट्स में, वो सब चलेगा. मतलब आप रियलिटी के पास मत जाओ, आप हो नहीं उस रियलिटी में. एसेंशियली फॉर मी दैट इज माय मोटो विद Karan Johar, or what works for me at least. So but what Suhani saying about the New York element, वो है definitely थोड़ा बहुत. I think I was noticing मेरे कॉलेज के बगल में बहुत शूट हुई है एक्चुअली कुछ सीन्स. I was like just noticing that कि यूनियन पार्क में कितनी शूट हुई है ये, और यूनियन पार्क स्क्वायर के पास. I think there are scenes. कुछ तो हुआ है तो set in Toronto. Sorry, because a lot of the film is shot in Toronto for budgetary Okay. reasons apparently. Hmm. So yeah, I Okay. mean है And उसमें location का definitely yes. मैंने किस्सा भी सुना था. सैफ अली Mhm. narrated this incident, that just the way Aman helps everyone, he creates this magic and helps everyone to overcome their problem, like the restaurant business. He helps them, Mhm. overcoming the challenges of restaurant business. So Saif, he was kind of restarting his career during Dil Chahta Hai and Kal Mhm. Ho Na Ho phase. So he said that he was so much in awe of Shah Rukh Khan because exactly Shah Rukh Khan was helping the whole shooting crew Mhm. and team in a similar way. He was Mhm. working his magic and charm with the NYPD officers and the authorities की किसी Mhm. तरीके से कुछ जुगाड़ करके अपना चार्म यूज करके सारी जो शूटिंग में जो हिंड्रेंसेस आ रही हैं उनको Mhm. दूर करना. So Mhm. I think a lot of Aman's charisma is derived Yeah. from his Shahrukh real only, right? Yeah. persona. Yeah. And Well, Yeah. Sanket, quickly, I think we should talk about the writing of the film, the writing of the characters, and some of the very beautiful stories, supporting stories of the film, of the Mhm. story. Mhm. एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली मैं एक्चुअली ये चीज को लाने वाला था अबाउट वन पॉइंट. मतलब जो डॉक्टर ने भी बहुत मेंशन किया, एंड बट वील डेफिनेटली टॉक अबाउट द राइटिंग. Mhm. आई वोंट बी द बेस्ट पर्सन टू टेल अबाउट दिस, क्योंकि यार Mhm. like I don't have that much to talk about the writing. Mhm. Obviously it's okay, चलो ठीक है, Mhm. जो भी है हो रहा है हो रहा है हो रहा है. Mhm. एक एक चीज मुझे ऐसे लगी कि Mhm. इन द राइटिंग कि Mhm. व्हेन लाइक इन द स्टार्ट के जब भी शाहरुख का कैरेक्टर आता है. Mhm. ओके, सुहानी इज गॉन बट आ सुहानी जाएगी is, वो. I think वो थोड़ा fluctuate हो रहा था एक हाँ, मिनट. हाँ. बट लाइक जब भी शाहरुख का कैरेक्टर आता है और एंड ही स्टेट्स कि यहाँ पे उसका मतलब सिर्फ वो चड्डा जी के वहाँ पे उसके भतीजे है. Mhm. एंड इट क्वाइट लाइक वो थोड़ा मुझे हजम नहीं होता है, या लाइक मुझे वो वर्कआउट नहीं करता है कि ओके किस रीजन के लिए आए, कुछ यहाँ पे मेंशन नहीं है, और जस्ट बस ऐसे आके ही वो जस्ट काफी फास्ट पेस में हो रहा था और काफी Hmm. काफी कुछ हो रहा था विदाउट जस्ट गिविंग सम काइंड ऑफ जस्टिफिकेशन. थोड़ा सा काफी पहले कि लाइक Hmm. व्हाई इज ही कमिंग वैसे. To, सो but the only thing I'll say is, Sanket, at least the way Suhani, did you hear what Sanket said, or No, no, were I you okay? couldn't. So Sanket, I think, was just saying about how he didn't um, kind of buy the fact ki how Shah Rukh Khan reaches the Chadha uncle's place, essentially what his role is there and why he's there, sort of like that, if I'm not wrong, right? Yeah, That's the yeah. point you were getting at. So I think one of my, again, main counter to that is कि उसका पहला वाला sequence जो है is a sequence of Jesus Christ coming to whatever. He's a miracle person. फरिश्ता है, right? That's what they keep on saying कि फरिश्ता है. Hmm. So I'm like, वो
ड्रीम लॉजिक तो आपको वो सीन में उसके पहले एस्टैब्लिश कर दिया है, सो आपको नाउ अगेन इट इज डिपेंडेंट ऑन द व्यूअर कि वो बाय करता है या नहीं करता। वो ऑफ कोर्स मैं नहीं बोल सकता कि सब बाय करेंगे, बट टू मी पिक्चर अपने अपने लॉजिक से डिफाइन कर देती है। लाइक टू मी इट्स नॉट लाइक कि पिक्चर ये नहीं दिखाती कि वो फरिश्ता है और फिर एक्सपेक्ट करती है हमें जानने के लिए कि वो फरिश्ता है। पिक्चर उसको इस्टेब्लिश ही ऐसे करती है कि वो है ही ऐसा। आई मीन उसको पूरा एंट्री फुल मिलता है शाहरुख खान को जैसा एंट्री मिलेगा उस टाइम पे, आई थिंक, एंड मोर देन दैट इनफैक्ट कितनी बार उस वो पोज करता है अपना ट्रेडिशनल वाला, आई थिंक 2-3 सॉन्ग्स में भी 1-2 बार पोज करने के लिए मिलता है उसको। तो सो आई थिंक फॉर मी वो अगेन लॉजिक इज समथिंग विच नॉट अ प्रॉब्लम फॉर मी एट ऑल टू लाइक साइड स्टेप। मेरे लिए बहुत ईजी है वो साइड स्टेप करना बिकॉज इमोशनल लॉजिक सॉर्ट ऑफ टेक्स ओवर फॉर मी। आप जो पॉइंट्स बना रहे हो वो बहुत अंडरस्टैंडेबल है फॉर समवन हु वोंट बाय द इमोशन एज मच एज आई एम बाइंग इट, तो which is करेक्ट, right, I mean वो ही चक्कर है which is totally understandable, एब्सोल्युटली। and I get that, but yes, Suhani, you were saying about the writing. I think it's good we should talk about the Yeah. subplots So and how they are sort of play into it. Yeah. yeah. So I Mm. think we are a little over time. So I'll just Yeah. quickly wrap it. So I think it in a way started the angle of infidelity in Karan Johar film. Mm-hmm. So it starts with because before this he had made Kabhi Gum and Kuch And Kuch 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 Hota Hai, hota right? कुछ होता Mm-hmm. है, यस। And the angle of Jia being born out of marriage, Yes. in Jaya Mm-hmm. Bachchan's relationship, and then we see the angle of we see a full-fledged film about infidelity in Kabhi Alvida Na Real Kehna, good. and then Mm-hmm. there is uh, um, a hint of it in Kapoor and Sons, and Mm-hmm. then again Rocky and Rani is about extramarital affair and Mm-hmm. infidelity in a relationship. So Mm-hmm. I think Karan, he has certain fascination with people being people looking for love out of their marriage, and Mm-hmm. it starts with Kal Ho Na Ho. Then Mm-hmm. I think I'm not a Karan Johar fan, as Amar Mm-hmm. said. I'm a diehard Shah Rukh Khan fan, not a Mm-hmm. Karan Johar fan. But Mm-hmm. I have so much gratitude for, the writer Karan Johar and the dialogue writer Niranjan Iyengar for Mm-hmm. giving us Rohit, who is Yes. like the greatest, unrequited lover of our cinema. Because Mm-hmm. I had said this, 2-3 years ago, and I saw this post today where someone Mm-hmm. wrote, which is exactly what I said, that Rohit is the lover which we need but we don't deserve, because he's such a sweetheart. He's a wonderful guy, who, and Seth also gives that vibes. He comes from a certain affluence, and Yes. he has Mm-hmm. this very elite looks and behavior, and he has a very harmless personality. Even Saif Ali Mm-hmm. has a very harmless Mm-hmm. personality, and which same goes for Rohit. And Mm-hmm. although the Aman is the hero of the film, but even if he hadn't got that illness, even then I wouldn't have liked him much, because he's very cocky and very patronizing and very bullish, Yes. and a little arrogant, Mm-hmm. and he is a little bit annoying too. Oh, annoying. But Yeah. Yeah. He's yeah, very yeah, yeah. imposing. It's very Yeah. annoying. But Yeah. the way the amount of gravitas which Karan Johar and Niranjan Iyengar and Saif Ali have given to Rohit Yeah. is, I think it needs to be talked more. Yeah. He's such a large-hearted guy, who knows that, who is willingly entering into a relationship with a girl who doesn't love Love him him. at Yeah. first place. Mm-hmm. And when you guys were talking about that, how you were emotional about the scene where Shahrukh and Saif are talking to each other, I was just, amazed by the brilliance of Karan Johar and Nikhil Advani, that they didn't give much dialogue to last scene of Shahrukh and Priti.
but Pretty. they ended the scene with Shah Rukh and Saif conversing with each other Mm-hmm. about Naina, and he says Mm-hmm. कि अगले हर जन्म में वो मेरी Mm-hmm. रहेगी, and you can see the large-heartedness of Rohit and just Mm-hmm. the purity of his heart and simplicity Mm-hmm. of his heart in that scene. And I am madly in love with Rohit. तो अगर मुझे रोहित और अमन का option मिलता, I would have in any case would have chosen Rohit over Aman. He's a Mm-hmm. beautiful, beautiful guy, and Yeah. although that Grand Central Station scene is my favorite confession ever, कि Mm-hmm. मैं आंखें बंद करता हूँ तो तुम्हें देखता हूँ, Maybe आंखें that. खोलता हूँ तो Mm-hmm. तुम्हें देखना चाहता, that whole Mm-hmm. scene. But I will put प्यार का पहला कदम दोस्ती है और आखिरी कदम भी Mm-hmm. दोस्ती है, अपने कदम बढ़ाओ नैना, और इसके Mm-hmm. लिए मैं तुम्हें सारी जिंदगी सारी देता हूँ. जिंदगी देता हूँ. Mm-hmm. I'll put that dialogue of Rohit here in Yeah. comparison to Grand Central scene. So, Yes. Yes. Yeah. and he's all heart. So I think Saif Ali Khan deserves all love for Kal Ho Na Ho, and he has Mm. given us, ये जो टॉक्सिक मेल कैरेक्टर्स की जो आज के जमाने में बात हो रही है, बहुत अच्छे टाइम पे कि बात कर रहे हो आप संकेत. आपको अगले हफ्ते कुछ और मिल रहा हाँ है, बहुत डिफरेंट टाइप का हाँ, फ्लेवर तो का. Rohit is a beautiful character given by these writers, and he needs to be celebrated more. But I think it's a bit of a. I know Sanket. Tell me when to shut up. I will. No, it's The okay, but yes, एक नहीं point नहीं. के बारे में बात करनी थी, but yes, ये No, I'm topic है just saying last briefly that I think Karan Johar, if like the flaws and all whatever, I think one of the things which he is good at, and I think one of the things that he has given is the sort of softer masculinity characters, people who can cry, people who can be sensitive, people men who can be sensitive, men who can cry. I think Men people who who don't can like his, cook, who can yeah, cook every हाँ like हाँ the femininity, what you call हाँ femininity, हाँ हाँ, that's shameful in men essentially हम्म, has kind of, and a friend sort of made this point very much, that he's normalized it in a way which is very hard to do. It's not a हम्म. easy, normalize these things, especially stars doing all this is a bigger thing. So yes, हाँ संकेत बोलो. Actually, एक चीज like थी जो last I wanted to talk about. Mm-hmm. This film wouldn't be complete without the supporting characters यार. Mm-hmm. मतलब जो डॉक्टर तो बहुत बार बोल रहे थे कि no one is talking about राजपाल यादव, like Yeah, क्या yeah. क्या बढ़िया कॉमेडी और ये सब कर रहे थे, like even Mm-hmm. संदीप पाड़ी फ्रॉम फिल्म ग्रुप, जो काफी बार मनीष के साथ जब मैं पॉडकास्ट करता तो वो आते हैं, ज्वाइन होते हैं, तो he talks about in the minority maybe, but probably only two things that worked for him Yes. were Lilith Dubey's spoof on Pasha and Mm-hmm. Sonali's cameo. ये मुझे नहीं पता था कि उन्होंने वो स्पूफ किया था विपाशा जिस्म बासु का ना, I think, का. Yes. if I'm not wrong. ये Again, I'll say कि ये Karan Johar का stamp है, because Karan Johar is so aware about all the great films being Yeah. made in his period amongst his Yeah. contemporaries. तो Contemporaries. उसने सारा include किया. He loves Lagan, so he included बार बार वो from Lagan. है ना, and then he said मैं उन्होंने he's a fan of दिल चाहता है, so he included दिल चाहता है कि मैं क्या करूँ स्वीटू, अगर मैंने दिल चाहता है नहीं देखी, अगर मुझे हेयर स्टाइल्स के बारे में नहीं मालूम. And then Yeah. there is a amazing joke when the Sardar man says कि अगर दो भगत सिंह की Yes. फिल्म हो सकती है तो तो नाम क्यों नहीं हो सकते. And then there is hilarious spoof of Jism. So Yes. this is Karan Johar's stamp, Yeah. and none other than him. Yeah. even like Bomek बोलते हैं कि the whole Galadgar scene is outstandingly written and executed, and I don't believe it wasn't ghost directed. It was like I also don't believe it was ghost directed by Karan Johar. वैसे. I mean, So there's a fair argument. I mean, I'm happy to hear, like, you should bring Nikhil Advani to ask him what all stuff he directed and what all stuff Karan Johar directed. yes, I think it's the writing which is so Karan Johar, which it is because he has written it, that maybe overrides the direction ka stuff a little bit. But there are direction touches which I don't think come back in his later films. So it might just be a thing which Nikhil Advani added. So yeah. Nikhil Advani worked under him though, right? I think as associate director also. So like again,
like talking about the supporting characters, काफी सारे अच्छे characters बहुत like हैं about the even actors like जैसे मैंने mention किया था अभी about राजपाल यादव, कभी भी जब भी ऑन स्क्रीन आते हैं छोटा सा अपीयरेंस है, लाइक बड़े सीक्वेंस में एक अपीयरेंस है, Yeah. बाकी सारे बीच में अपीयरेंस है, Yeah. जब भी आते it was amazing of Yeah. him, like It's a even good. I mean, actually, what one of the comments mentioned about rhyming. There's a great rhyming in that scene of the Galat Ghar, where one thing, one word like transitions to, like the way the movie transitions between some of the scenes actually is very, very well done. Which is again something which I don't think. I think editing to like बर्बाद हो गई है essentially आजकल के ज़माने में. So this is like the type of things. This is the type of thing I really respond to also, जो rhyming बैठती है scenes के बीच में, characters के बीच में. Sweetu का relationship is rhymes with when Naina का relationship Yeah. becomes good, everything like all that, like it flows together, whatever you want to say in that sense. But yes, all supporting characters. I mean, Jaya Bachchan and Shah Rukh Khan should always do mother and son. There is no better mother son dynamic probably for me कभी at खुशी least. कभी गम के बाद ही उन दोनों को like same जैसे कास्ट किया होगा Reema शायद से. Lagu is actually also very good in this, huh? Like with the brief moments of motherly Yeah. affection she gets are really, really moving. Guys, To cry, excuse I me, don't know if but people really notice this moment that much or not, but one moment I always cry in is the one where he hears the news of Preeti accepting Rohit's proposal, and then he asks everyone for a hug, and then he's crying when the yeah. camera's swirling, and then everyone's happy, and I'm like, हाँ मतलब I'm वो sobbing. एक्चुअली यही एक चीज थी जो इट क्वाइट लाइक इतना वर्क किया मेरे लिए कि लाइक Hmm. आई कुड फील दैट थिंग कि Mhm. कैसे लोगों के लिए वो भलाई कर रहा है वहां पे, लोगों के लिए वो Mhm. कर रहा है, लेकिन उसके खुद की जिंदगी में तो उतना ही जैसे डार्कनेस जैसा है, उसके खुद की जिंदगी Yeah. में तो उतना ही लोनलीनेस जैसा है, और वो Mhm. कुछ चाहना चाह रहा है लेकिन वो कुछ कर नहीं पा रहा है. Mhm. सो वो सीन जैसे लाइक ध्रुव ने बहुत अच्छा पॉइंट आउट और बहुत अच्छा Mhm. किया कि मेंशन किया कि वो Guys, सीन. sorry, but I'll have to take your leave. Oh I Yeah, have yes, I know. something I think we are personal to overtime attend. anyways, Yes, I right? think I'm so sorry, Yeah, लेकिन yes मैं थोड़ा भावनाओं में थोड़ा बह गया था, लेकिन yes मैं actually we all. वो नहीं This is such kind of film. no Yeah. absolutely, क्योंकि इस फिल्म में और भी कितने सारे चीजें हैं, like we can Yes. do a part 2, but Yes. I think 25 साल के लिए रखेंगे definitely Yeah. कभी वैसे. हाँ 5 साल तो चाहिए सर नेक्स्ट रीवॉच के लिए मुझे. इतना इमोशनल ट्रैकेज नहीं ढूंढ सकता फिर से. एग्जैक्टली सो इसलिए Yeah. सो यस बट फाइनली एक चीज वर्कआउट नहीं हुई थी, लास्ट वाला जो उन दोनों की बेटी वाला सीक्वेंस. ओके दैट Ah, डिडंट वर्क okay, fair enough. आउट. एंड टू Beti, हाँ, एंड अच्छा, विद okay, दैट. okay, yes, yes. They have यस conspiracy theories about that, which I read, and I was like, please don't. ये सारी conspiracy theories नहीं चाहिए मुझे. But okay. Okay. yes yeah, but thank you so much guys, and also the Thank you. people joining, you can follow Suhani on Instagram on by @cinema and beyond, right Suhani? Yes, ये Cinema and वही है, Beyond. cinema and beyond. And you can follow Dhruv. Dhruv का तो Instagram handle लिखा ही है @terminal Yes. cinema. So Thank you. you can follow me at Cinephile_Sanket. Thank you so much guys for joining. Hope to see you in once again कभी कभार. Animal के लिए. अभी एनिमल के लिए तो देखते Direct हैं अगले. contrast. हाँ इसलिए so देखते हैं, let's see. चलो. चलो. Okay, thank you. Okay.